Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 7. How are you all? I'm your English teacher speaking, Sir Suhail from Sabqan Education Services. As you all know, that globally the third wave of this pandemic coronavirus has been hit very severely. Stay home, stay safe, take care of yourself and people around you. Wash your hands regularly. And from today we are going to continue our studies online. As per the government directives, the school had to be shut down immediately due to the third wave of this corona. So today online we are going to start the revision of our chapter number 4, and today is session 1. Let's begin today's class. Alright students, so this is our fourth chapter, the ghost. The characters of this whole chapter are Matilda, Mr. Wormwood, Mrs. Wormwood, who are the parents of Matilda, Michael, the brother, and Fred, the friend, and he is also the neighbor of Matilda. So class, as you know, as usual, that after the explanation slides, you will find the slides of home assignment of long short question and answers that you will do in your English textbook copy and then give for the checking. Alright, class 7, so let's start the chapter here, the ghost. As you know in the previous chapter how Matilda has planned some tricks to stop the rash attitude of her father, that she had applied some super glue in his hat and which he had to put on every day, and after that how he had suffered that hat on his head continuously because it was unable to be removed, and what were the tricks both husband and wife had applied to take it off, but it was impossible. Now in this chapter also the ghost, she has planned one more trick or a prank for her father due to this bad attitude towards the daughter, and she has gone to the neighbor called Fred, who is just a 6-year-old boy who had got a talking parrot. So she is now planning a prank with the talking parrot to stop the father's rash attitude. Now let's see. Now I start the reading and then I'll explain in the Urdu also. That was the English explanation little bit. The ghost. There was comparative calm in the Wormwood household for about a week after the superglue episode. The experience had clearly chastened Mr. Wormwood, and he seemed temporarily to have lost his taste of boasting and bullying. तो यहाँ पर क्या है कि comparatively कहते हैं कि वॉर्मवुड का जो है एक हफ्ते के लिए इस सुपर ग्लू की जो कहानी हुई है इसके बाद थोड़ा सा खामोशी हो गई इनके घर में, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ. तो ऐसा लगता था कि इस वाक़ये के बाद जो है मिस्टर वॉर्मवुड जो है अपने सेंस खो चुके हैं कि वो जो अपनी खूब तारीफ़ें करते थे, अपनी बड़ाइयाँ मारते थे. ठीक है, एज़ यू ऑल नो दैट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग हिमसेल्फ दैट ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन एंड वेरी क्लेवर मैन इन द बिजनेस. सो दैट वाज स्टॉप्ड. Then suddenly he struck again. Perhaps he had had a bad day at the garage and had not sold enough crummy second-hand cars. There are many things that make a man irritable when he arrives home from work in the evening, and a sensible wife will usually notice the storm signals and will leave him alone until he simmers down. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अचानक फिर उनके अंदर रवैये में कुछ तब्दीलियाँ आने लगी, तो ऐसा लगता था कि उस दिन उनका जो है गाड़ियाँ काफ़ी नहीं बिकी, एज ही वॉज अ कार डीलर. सो दैट्स वाई ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को इरिटेट करती है जब वो घर आता है शाम में. एंड द राइटर सेज दैट हूएवर वुड बी द सेंसिबल वाइफ, शी विल नोटिस दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. जो तूफ़ान होते हैं उसके सिग्नल्स को वो समझ जाती है, और जब तक वो थम ना जाए या ठंडा ना हो जाए मिजाज के उनके हस्बैंड्स, तो वो उनको छोड़ देती हैं. So that is what writer is saying in this paragraph. Now see the next paragraph. When Mr. Wormwood arrived back from the garage that evening, his face was as dark as a thunder cloud, and somebody was clearly for the high jump pretty soon. His wife recognized the signs immediately and made herself scarce. He then strode into the living room. Matilda happened to be curled up in an armchair in the corner, totally absorbed in the book. Mr. Wormwood switched on the television. The screen lit up. The program blared. Mr. Wormwood glared at Matilda. She hadn't moved.
She had somehow trained herself by now to block her ears to the ghastly sound of the dread box. She kept right on reading, and for some reason this infuriated the father. Perhaps his anger was intensified because he saw her getting pleasure from something that was beyond his reach. तो उस दिन जब मिस्टर वॉमवुड जो है शाम को अपने घर वापस आए तो द राइटर सेज हिज फेस वाज एज डार्क एज अ थंडर क्लाउड जैसे डार्क होते हैं उस तरह का उनका चेहरा हो रहा था। तो हिज वाइफ क्विकली रिकग्नाइज दैट साइन, समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। सो आफ्टर दैट ही स्ट्रोट इनटू द लिविंग रूम। वो लिविंग रूम में चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मटिल्डा वॉज बिजी एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बुक रीडिंग। वहाँ पर थी वो एक सोफे पे बैठी हुई खामोशी से रीडिंग कर रही थी। मिस्टर वॉम्बो हैड स्विच ऑन द टेलीविज़न और प्रोग्राम की आवाज़ें आने लगीं, बट मटिल्डा जो है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ बिकॉज शी वॉज नाउ ट्रेंड हरसेल्फ। वो अपने आप को इतनी परफेक्ट हो गई थी रीडिंग में कि अगर टीवी ऑन भी हो जाए, बिकॉज शी यूज टू कॉल टीवी द ड्रेड बॉक्स, अगर ड्रेड बॉक्स वो कहती थी उसको, टीवी को ऑन भी हो जाए तो वो जो है अपने रीडिंग पे कंट्रोल ही रखती थी। तो ये सब देख के थोड़ा सा मिस्टर वॉमवुड को गुस्सा भी आया कि मैं आया हूँ टीवी चला दिया, मगर जो है मटिल्डा के ऊपर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ दैट। सो और उसको ये भी देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और गुस्सा उनका बढ़ रहा था बिकॉज एज यू नो दैट ही वाज अगेंस्ट दिस मटिल्डास एक्टिविटीज़ दैट शी वाज इन्वॉल्व इन द रीडिंग। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो पढ़ती रहती हैं। तो जब उन्होंने इसको देखा कि वो अपना लुत्फ़ उठा रही हैं रीडिंग में, तो उसको वजह से जो है इनका थोड़ा सा और गुस्सा बढ़ता गया। फिर उन्होंने क्या कहा, डोंट यू एवर स्टॉप रीडिंग, ही स्नैप्ड एट हर। तो क्या तुम कभी रीडिंग रोक नहीं सकती हो, गुस्से से उन्होंने कहा। ओह हेलो डैडी, शी सेड प्लेजेंटली, डिड यू हैव अ गुड डे। फिर मटिल्डा ने नोटिस किया फादर की तरफ और कहा, मैं उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा ही गुजरा होगा, है ना। व्हाट इज़ दिस ट्रैश, ही सेड स्नैचिंग द बुक फ्रॉम हर। और फिर मिस्टर वॉमवुड ने जो है उसके हाथ से बुक छीनी और कहा कि ये क्या बेकार चीज़ है, इस तरह से। देन ऑन द नेक्स्ट पेज जब उनके फादर ने उनकी बुक स्नैच कर ली थी, तो इट इज़ इन ट्रैश डैडी, इट्स लवली, इट्स कॉल्ड द रेड पोनी, इट्स बाय जॉन स्टिनबैक एन अमेरिकन राइटर, व्हाई डोंट यू ट्राई इट, यू लव इट। तो कहती है डैडी ये बेकार की चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम वो बताती है रेड पोनी, जॉन स्टिनबैक ने इसको लिखा है, अमेरिकन राइटर ने, आप भी पढ़ें आपको भी अच्छा लगेगा। फिल्थ, मिस्टर वॉमर सेड, if it's by an American, it's certain to be filth. That's all they write about. No, Daddy, it's beautiful. Honestly, it is. It's about. तो कहती है अच्छा, अपने डैडी को जब कहे तो उनके फादर रिप्लाई करते हैं कि अमेरिकन राइटर, फिर तो यकीनन ये बेकार की चीज़ होगी, क्योंकि अमेरिकन जो है वो बेकार की बातें ज़्यादा लिखते हैं। ही वॉज क्वाइट अपोजिंग द अमेरिकन राइटर्स एज ऑलरेडी ही वॉज नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एंड उसके बाद जब अमेरिकन का पता चला तो वो और ही अगेंस्ट पे। तो मटिल्डा कहती है नो डैडी इट्स ब्यूटीफुल ऑनेस्टली, नहीं वाकई में बहुत अच्छी किताब है, आप देखें तो सही, वो बताने की कोशिश करती है। आई डोंट वांट टू नो व्हाट इट्स अबाउट मिस्टर वॉमवुड बा, आई एम फेड अप विद योर रीडिंग एनीवे, go and find out something useful to do. With frightening suddenness, he now began ripping the pages out of the book in handsful and throwing them in the waste paper basket. तो वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं देखना या सुनना ये किसके बारे में, ज़ोर से चिल्लाने लगे एज ही वॉज ऑलरेडी फेड अप। एंड वो कहते हैं कि गो एंड फाइंड समथिंग यूज़फुल टू डू, कोई अच्छी चीज़ देखो करने के लिए जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। और अचानक जो है वो पेजेस फाड़ना शुरू हो जाते हैं एंड स्टार्टेड टू थ्रो देम इन द डस्टबिन या वेस्ट पेपर बास्केट जो होती है उसके अंदर, वो उसके पेपर्स फाड़ कर फेंकना शुरू कर देते हैं। मटिल्डा फ्रोज इन हॉरर, मटिल्डा जो है हैरत से या डर से जो है एकदम अपनी जगह ठहर जाती है। द फादर केप्ट गोइंग, देयर seemed little doubt that the man felt something kind of jealousy. How dare she, he seemed to be saying with each rip of the page. How dare she enjoy reading books when he couldn't? How dare she? तो वो देख रही थी कि किस तरह से उसके फादर जो है उसकी बुक को फाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जेलसी में है और गुस्से में, वो ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कि इसकी इतनी जुर्रत कैसी है, हिम्मत कैसी हुई रीडिंग करने की, मैं तो करता नहीं हूँ। तो हर पेज को फाड़ते हुए ही वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट।
That's library book, Matilda cried. It doesn't belong to me. I have to return it to Mr. Phelps. Then Matilda informed her that it's not her personal book she had got from the library. और उसने बताया कि ये मुझे लाइब्रेरी में वापस रिटर्न करनी है to Mr. Phelps. Then you will have to buy another one, won't you? फिर उसके फादर पूछते हैं फिर तो तुम्हें एक और ख़रीदनी पड़ेगी है ना. Still tearing out the pages, और pages वो अभी तक फाड़ ही रहे थे. You will have to save your pocket money until there's enough in the kitty to buy a new one for your precious Mrs. Phelps, won't you? With that he dropped the now empty covers of the book into the basket and marched out of the room, leaving the telly blaring. और उन्होंने कहा कि फिर तुम जो है अपनी पॉकेट मनी को सेव करो, इतनी सेव करो कि जब तक तुम इतने पैसे जमा कर ना कर लो कि तुम मिसेस फेल्प्स को अपनी ये बुक वापस कर सको. एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग मीनवाइल द बुक वाज एम्प्टी विद द रिपिंग पेजेस. ठीक है, पेजेस फाड़ के उन्होंने बुक को एम्प्टी कर दिया था. सो देन ही थ्रू द कवर ऑफ द बुक इनटू द बास्केट. वही कचरे की जो बास्केट थी इनकी उसमें उन्होंने डाला और टीवी खुला ही रख के वो रूम से बाहर चले गए. Most children in Matilda's place would have burst out into flood of tears. राइटर कहता है कि अगर मटिल्डा की तरह के जो भी बच्चे होते हैं तो वो फट पड़ते और आंसुओं से रोने लगते इस वाक़े के बाद. She didn't do this. उसने ऐसा नहीं किया. She sat there very still and white and thoughtful. She seemed to know that neither crying or sulking ever got anyone anywhere. तो यही सोच रही थी कि बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई सोच में कि रोने से या अपना मूड ख़राब करने से तो कुछ नहीं होता, इससे किसी की कभी मदद हुई है ना होगी. The only sensible thing to do when you are attacked is, as Napoleon once said, the counter attack. तो नेपोलियन की उसने बुक पढ़ी थी. सो दैट हिज सेइंग गॉट हिज इन हिज माइंड कि एक ही चीज़ होती है इस तरह पे, अगर आप पे अटैक किया गया तो आप उस पर काउंटर यानी कि वापस अटैक करें. Matilda's wonderfully subtle mind was already at work, devising yet another suitable punishment for the poisonous parent. तो यहाँ पर जो है मटिल्डा का दिमाग जो है चल ही रहा था इसके ऊपर कि दोबारा कुछ प्रैंक टाइप के जो पनिशमेंट ये करती हैं ये कुछ करनी चाहिए ताकि एटीट्यूड में दोबारा थोड़ी सी चेंजेस आए, क्योंकि प्रीवियस का जो इफेक्ट था वो उसको लग रहा था ख़त्म हो गया. इट इज़ ऑल डन. द प्लान दैट वॉज नाउ beginning to hatch in her mind depended, however, upon whether or not Fred's parrot was really a good a talker as Fred. तो वो यही सोच रही थी कि उसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था कि फ्रेड का जो पैरेट है, इसका जो दोस्त है फ्रेड हु इज़ अ नेबर, उसके पैरेट के बारे में ये सोच रही होती हैं. कुछ क्या सोचती हैं वो. ऑलराइट देन हियर इज अबाउट द फ्रेड कि शी वाज प्लानिंग टू टेक द पैरेट फ्रॉम द फ्रेड. Fred was a friend of Matilda. He was a small boy of 6 who lived just around the corner from the Matilda, and for days he had been going on about this great talking parrot his father had given. तो 6 साल का एक बच्चा था जो कि इनके कॉर्नर में रहता था पड़ोस में, और कुछ दिनों से बता रहा था कि हिज फादर हैड गिवन हिम अ टॉकिंग पैरट, एक बोलने वाला तोता उसके फादर ने उसको ला कर दिया है. So the following afternoon, as soon as Mrs. Wormwood had departed in her car for the another session of bingo, Matilda set out for Fred's house to investigate. तो जैसा कि आपको पता है कि हर दोपहर को मिसेस वॉर्मवुड बिंगो की शौकीन थी तो खेलने चली जाती थी. तो दैट डे सेम थिंग हैपेंड, शी वेंट फॉर द सेशन ऑफ बिंगो इन द कार. तो ऐसे एज सून एज शी लेफ्ट मटिल्डा वेंट टू द हाउस ऑफ फ्रेड. फ्रेड के घर गई तो कुछ मालूमात करने के लिए. She knocked on his door and asked if he would be kind enough to show her the famous bird. तो दरवाज़ा बजाकर उसने कहा कि अगर तुम अपना मुझे bird दिखा दो. Fred was delighted and led her up to his bedroom where truly magnificent blue and yellow parrot sat in a tall cage. क्योंकि बच्चे ऐसे normally खुश हो सकते हैं. It's natural with the children that when somebody else comes to see their personal thing they get happy. तो इसी तरह से फ्रेड भी खुश हुआ और उसको अपने कमरे में ले गया जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू एंड येलो कलर का पैरट जो है एक बड़े से केज में था. देयर इट इज़, फ्रेड सेड, इट्स नेम इज़ चॉपर. फ्रेड ने बताया कि ये है और इसका नाम चॉपर है. फिर मटिल्डा कहती है इसको बात कराओ, मेक हिम टॉक. So you can't make it talk, Fred said. You have to be patient. It will talk when it feels like. तो फ्रेड कहता है कि ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. तो ये जब इसका दिल करता है ये खुद ही बोलता है. They hung around waiting. Suddenly the parrot said, "Hello, hello, hello." तो थोड़ी देर वहाँ पर ये लोग बैठे रहे खामोशी से इंतज़ार में. तो अचानक पैरट ने 3 दफ़ा हेलो कहा.
It was exactly like a human voice, Matilda said. That's amazing. What else can he say? तो मटिल्डा का ये तो बिल्कुल इंसानों की आवाज़ में कहता है, और क्या बोल सकता है ये? Rattle my bones, the parrot said, giving a wonderful imitation of a spooky voice. Rattle my bones. और फिर एक खूबसूरत सी और अच्छी सी आवाज़ में rattle my bones उसने 2 दफ़ा पैरट ने दोहराया. He always saying that thing, Fred told her. Fred ने बताया कि वो हमेशा ऐसे ही बोलता है. What else can he say? मटिल्डा को काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार क्या कुछ बोल सकता है, बिकॉज शी वॉज हैविंग सम प्लान इन हर माइंड वॉज वर्किंग. तो काम तो कर रहा था उसका जहन कि मैं प्लान बना रही हूँ. दैट्स अबाउट इट, फ्रेड सेड, बट इट्स प्रीटी मार्वलस, डोंट यू थिंक? कहता है बस इतना ही बोलता है लेकिन ये है तो बहुत अच्छा, क्या ख्याल है? इट्स फैबुलस, मटिल्डा सेड. विल यू लेंड हिम टू मी जस्ट फॉर अ नाइट? तो मटिल्डा कहती है कि तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, तो तुम क्या मुझे इसको एक रात के लिए दे सकते हो? फ्रेड सेड नो, certainly not, क्योंकि फ्रेड जो है ही डायरेक्टली रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू गिव एनीबडी. उसे मना कर दिया. I'll give you all my next week's pocket money, Matilda said. Now Matilda has given him some attraction, और the Fred was thinking about it. तो उसने सोचा कि दे देता हूँ. उसने जब अट्रैक्शन दी कि नेक्स्ट वीक की पॉकेट मनी दे दूंगी. That was different. Fred thought about it for a few seconds. All right then, he said, if you promise to return him tomorrow. वो कहता है कि if you promise कि तुम कल मुझे वापस कर सकते हो, so only on that condition I'll give you. वो दे देता है. Matilda staggered back to her own empty house carrying the tall cage in both the hands. फिर जो उनकी डील हो गई तो मटिल्डा जो है उस टॉल केज को अपने हाथों से पकड़कर अपने घर ले आई. There was a large fireplace in the dining room and she now set about wedging the cage up in the chimney and out of sight. और फिर जो है उनके घर में जो फायर प्लेस था डाइनिंग रूम में, वहाँ की चिमनी में उसने खामोशी से वहाँ उसको पैरेट को रख दिया ताकि किसी की नज़र ना पड़ सके वहाँ पर. Okay, class 7, so that's all for today's session, and these are the slides of your home assignment. Short question and answer, and next one is long question and answers that you have to do in your text copy. And see you in the next session inshallah of this chapter. Till then, take care all of you. Allah Hafiz.